नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे जहाँ भी होंगे आप सब। और आज वीडियो लेके आया हूँ एक स्पेशल वीडियो। जैसे मैंने कहा था कल को, तो मैं स्पेशल एक वीडियो लेके आऊँगा। तो एक स्पेशल वीडियो है और ये है वंदे भारत के बारे में। और वंदे भारत तो सब जानते हैं कितनी अच्छी ट्रेन है, रिव्यूज़ भी बहुत अच्छी है। और ever और कुछ शुरू हो गया। तो फिर वंदे भारत में क्या कहूँ जो किसी को नहीं मालूम हो। इतने वर्ल्ड क्लास की ट्रेन है जो सब कंट्रीज ऑलरेडी सबने टूरिस्ट ने कहा था बहुत अच्छी ट्रेन है। बहुत फैसिलिटीज है, वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज है। और काफ़ी कंट्रीज हैं जो चाहते हैं तो that हम भी वंदे भारत को खरीद लें, परचेज करें वंदे भारत को। और उस पे भी डिस्कशंस हो रहे हैं। सो कमाल की ट्रेन है, डिज़ाइन कमाल का है। और अब पहली बार वंदे भारत आई है कश्मीर में, इंडिया की कश्मीर में पहली बार आई है वंदे भारत की ट्रेन। चलो देखते हैं, इस पे फिर रिएक्ट करते हैं। क्या है ये अपडेट वंदे भारत की, कश्मीर की पहली ट्रेन। railway link connecting Kashmir to the rest of India. Now, the Vande Bharat train from New Delhi to Srinagar has completed its maiden trail run. It has reached Srinagar railway station from Katra in Jammu. Our next report tells you how Kashmir is getting up for the mega launch next month. Years of hard work and dedication has paid off. The dream of Kashmir's rail connectivity has finally come true. The specially designed Vande Bharat train, the first ever rail service connecting Srinagar with the rest of the country, is set for its mega launch next month. The train has completed its maiden trial run from Katra in Jammu to Srinagar. The today's trial run, one of the objectives of this trial run today was to see how much time it is taking so that it can result in easier timetabling process for us. So today's trial run is a step towards it, and definitely it's going to be an all-weather connectivity. So it's going to immensely benefit the local population and the tourism sector here, and it's going to ensure that the tourists who are planning to visit to Kashmir Valley, for them it's an easier mode of transportation. This historic milestone has been achieved by completing the Udhampur-Srinagar Baramulla rail link. The new railway service has brought cheer to all communities in the Kashmir Valley, from businessmen to students, from tourists to non-local workers. Everyone has hailed the engineering marvel. If we talk about the advantages, all will be benefited. When we used to travel to Delhi, Punjab or Jammu from Srinagar, we had to take train to Banihal. Then, we had to take a car to reach our destination, which was time consuming, and we used to tired too. वंदे भारत बहुत फास्ट। The tourist stakeholders have been the happiest with the news of rail link between Srinagar and New Delhi. Kashmir has been eagerly waiting for a tourist boom after the service begins. First time we have been waiting for this wonderful thing to arrive for a long time, and it will be, as your question was, how beneficial it will be. It will surely be huge beneficial for the local people, for tourism, as well as for every citizen. It will be huge beneficial. The 800-kilometer long railway track from Srinagar to New Delhi will be covered within 13 hours of travel time, plus a stop over at Katra, where the passengers will have to deboard the train. The train is equipped with latest technology. From displays to comfortable chair, people of Kashmir will be benefited a lot. From Katra to Srinagar, the time of travel has been reduced to half. It takes only 5 hours instead of 9 hours. The railway track, which runs on the most difficult terrain of Himalayas,
will have more bridges and tunnels than any other railway track. The track will have around 931 brigades with 38 tunnels. This includes the longest train tunnel of Pir Panjal Railway Tunnel, measuring 11.21 kilometers, and world's highest bridge over the Chenab River. This will not only be helpful for the people of Jammu and Kashmir, but it will be great for the tourists as well. People who couldn't afford earlier the priced airfares can now basically book these trains and come to Kashmir Valley. The only hiccup that remains is that people who are coming from Delhi will have to deboard at the Katra railway station and then get onto another Vande Bharat to come to the Kashmir Valley. The business community as well as the tourist stakeholders have been demanding that there should be a direct train from New Delhi to Srinagar, and that is what people are waiting for. And as you can see, it's going to be a plush train that will basically bring not only Kashmiris but tourists from across the country to Kashmir, and it'll give a boost to the economy as well. The business community of Kashmir Valley is extremely happy with this step as well. With video journalist Feroz, Idris Loan for WION. So आपने देखा कैसे वंदे भारत आधा का टाइम रिड्यूस कर लेती है. इफ आपने वंदे भारत पे गए हो गए, जो चाहे गुजरात में क्यों ना हो, दिल्ली में क्यों ना हो, दिल्ली तो अहमदाबाद, वो फास्ट ट्रेन है और आधा टाइम तो कम हो जाता है जर्नी का. तो सब बिजनेस हो, चाहे वो बिजनेस हो चाहे स्टूडेंट्स हो, सब चाहते हैं दैट कम से कम वक्त लगे ट्रेन में. अब दिल्ली तो आप सीधा कश्मीर जा सकते हो वंदे भारत की ट्रेन में, और ये तो बहुत खुशी की बात है तो ऐसा कुछ हो रहा है. और इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के लिए और बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी स्टेप है मैं कहूँगा. और चाहता हूँ आप, उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा. कल मिलेंगे, कल और भी काफ़ी वीडियो लेके आऊँगा जो यूनिक वीडियो होएंगे, सम इंटरेस्टिंग वीडियो होएंगे जो मैं लेके आऊँगा राज रिएक्ट में. Until then, प्लीज़ अपना ख्याल रखना और अपना परिवार, अपने दोस्तों का ख्याल रखना. नमस्कार, जय हिंद.